G20 पीएम मोदी ने कोणार्क चक्र के सामने किया वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में विश्व नेताओं का शनिवार सुबह स्वागत किया। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सभी G20 नेताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में जिस स्थान पर नेताओं का हाथ मिलाकर स्वागत किया, वहीं पीछे एक बड़ा चक्र बना हुआ था। ये बेहद खास चक्र है जिसका नाम कोणार्क चक्र है। ओडिशा के कोणार्क चक्र को 13वीं शताब्दी के दौरान राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। कोणार्क चक्र वही चक्र है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। 24 तीलियों वाले कोणार्क चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रूपांतरित किया गया, जो भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिला उत्कृष्टता का प्रतीक है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। कोणार्क चक्र का इस समय का ही प्रतीक है, जो कोणार्क चक्र के साथ साथ प्रगति और परिवर्तन को दर्शाता है। भारत के लोकतंत्र और शक्तिशाली प्रतीक कोणार्क चक्र भारत के लोकतंत्र का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत शुरुआत से लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषक रहा है। भारत मंडपम में कोणार्क चक्र के अलावा नटराज की मूर्ति भी आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा भी भारतीय संस्कृति और कला को भारत मंडपम में समेटा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भारत मंडपम स्थल पर पहुंचने वाले पहले कुछ नेताओं में से थे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर समूह में मतभेदों के बीच भारत अपनी अध्यक्षता में आज और कल होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 के बारे में, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। G20 की शुरुआत, G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। नेता के स्तर तक उन्नति, 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राज्य सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर उन्नत किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नामित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णनशील राष्ट्रपति पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। G20 ने शुरू में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन बाद में इसने अपने एजेंडे का विस्तार करते हुए अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी को भी शामिल किया है। G20 प्रेसिडेंसी अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। G20 सदस्य ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड शामिल हैं। किंगडम ऑफ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लीडर्स डिक्लेरेशन की घोषणा को अपनाए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने G20 के सभी सदस्यों के समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की डिजिटल प्रति को साझा करते हुए एक ट्वीट में कहा, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाकर इतिहास रचा गया है। सर्वसम्मति और उत्साह से एकजुट होकर हम बेहतर, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का संकल्प लेते हैं। G20 के सभी सदस्यों के समर्थन और सहयोग के लिए उनका प्रति आभार।
इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल दोनों देशों के बीच मित्रता की 50वीं वर्षगांठ दोनों ही देश मनाते हुए और एक स्पेशल कैंपेन G20 से ठीक पहले चलाया गया, जिसमें दोनों देश एक साझी विरासत, विश्वास की विरासत को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, मित्रता को और प्रगाढ़ करते हुए। और G7 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इनसे हुई और अब G20 का मंच तैयार और पूरे साल हमने सहयोग देखा कोरिया का भारत की तमाम प्राथमिकताओं पर और स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक लिहाज से दोनों देश और ज्यादा करीब आते हुए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कई सदस्य देश जिनके आगमन का इंतजार और
presence of leaders from Mauritius and the World Bank. The IMEC MOU signed today will accelerate investments to scale high-quality infrastructure projects and the development of economic corridors through the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Excellencies, I would now invite the leaders to make their remarks. First, we will have the Honorable Prime Minister of India with his remarks. Your Highness, Excellencies, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सेलेंसी चांसलर शोल्च, हर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारी नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम
कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir. India and the United States of America co-chair this initiative, and now, as the co-chair, I invite the President of the United States for his remarks. Well, ladies and gentlemen, thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impacts of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. In practice, it means we're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. And today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Bridging ports across two continents, unlocking endless opportunities, including making it far easier to trade, export clean energy, expand access to reliable, clean electricity, lay cables that will connect communities and secure a stable internet, contributing to a more stable, more prosperous, and integrated Middle East. And I want to thank the sponsors. And I particularly want to thank Prime Minister Modi and the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, and President von der Leyen and the European Commissions. And since he's not speaking today, I wanted to, or maybe he is speaking today. I had a note he wasn't speaking at any rate. I'm going to stop there. In the sub-Saharan Africa, we're working in a private-public partnership as well to invest in a trans-African corridor. That includes a new partner, the European Union. President von der Leyen, thank you for making this very possible. Together, as part of this corridor, we're going to invest that will extend from the western port in Angola to to Zambia and ultimately the Indian Ocean. It's a project that's about far from just laying tracks. It's about creating jobs, increasing trade, strengthening supply chains, boosting connectivity, laying foundations that will strengthen commerce and food security for people across multiple countries. This is a game-changing regional investment, and both of these are huge steps forward. But they're far from the only ones. We're continuing to make big investments in infrastructure around the world. That includes a solar energy site, an insulin manufacturing facility, and electricity project right here in India. We're continuing to develop economic corridors across Africa, Asia, and the Americas. And together with our partners, we're working to mobilize the trillions of investment needed to close infrastructure gaps around the world, including the formation of a new investor forum that the United States will host in a couple weeks. Let me close with this.
The world stands at an inflection point in history, a point where decisions we make today are going to affect the course of our future, all of our futures for decades to come. A point where our investments are more critical than ever. So together, let's continue to work as one to seize this moment in history and maximize our collective investments, to find new partners, to unlock new capital. Because when we invest in low and middle income countries, all countries benefit. When we invest in emerging economies, all economies benefit. And when we invest in the future of people anywhere, people everywhere benefit. So I want to thank you again for being here. I look forward to working with all of you, and I'm going to turn it back to the Prime Minister. Thank you. Thank you, Excellency. We now invite the Crown Prince and the Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia for his remarks. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة الحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، أن تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه. وفي الختام لا يفوتني في هذه المناسبة. In conclusion, I'd like to commend the PGII launched by President Biden with the participation of Saudi Arabia in $20 billion. We look forward to the integration of the initiative and the Economic Corridor project, which is announced in this meeting. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step to establish this important economic corridor. My best regard to you all. Thank you, Your Highness. May I now invite the President of the European Commission for her remarks, please. Your Highnesses, Excellencies, it's been 2 years since we launched PGII, a joint vision by the world's leading economies to invest in the infrastructure that low and middle income countries need. And 2 years on, more large-scale projects are seeing the light, and we are presenting two of them today. First, the India-Middle East-Europe Economic Corridor. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster, with an electricity cable and a clean hydrogen pipeline to foster clean energy trade between Asia, the Middle East, and Europe, with a high-speed data cable to link some of the most innovative digital ecosystems in the world and create business opportunities all along the way. These are state-of-the-art connections for the world of tomorrow, faster, shorter, cleaner. This corridor is much more than just a railway or a cable. It is a green and digital bridge across continents and civilizations. And this is also the spirit of the second project we announced today, the Trans-African Corridor, which will connect the port of Lobito in Angola with the Katanga province in DRC and the Copper Belt in Zambia.
Our goal is not only to connect a landlocked region to the sea. Our partnership will also invest in local value chains, in clean energy, and in skills for the local workforce. This is the spirit of PGII. It is a whole new approach to large infrastructure investment. It is about shared prosperity. It is about real benefits for all partners. Thank you. Thank you, Excellency. May I now invite the President of France for his remarks, please. Thank you so much. Everything was said, so I just want to thank Prime Minister Modi for organizing this meeting and President Biden for sharing this meeting with him. We are committed, and we had several exchanges with my friends Mohammed bin Zayed, and I want to thank you, Your Highness, and Mohammed bin Salman, Narendra Modi, on this very important project. So everything was said. So now, with the European Commission, here as European government, we commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. But our intention is as well to make it real, and to be sure that after this commitment we have concrete results, and especially to have the first global green trade road, meaning having net zero transport infrastructure, so to be sure that we have the best technologies. We have hydrogen being part of this project, and we channel all the possible common developments. I think as well our intention is to have a fair process. I mean, offering a lot of opportunities to manufacture in the different countries and to cooperate very actively on building these roads, building the innovations going with it, and innovating together. I don't want to be longer. Thank you very much for this. This ceremony is very important. We commit together. Thank you, Excellency. May I now invite the Chancellor of Germany for his remarks, please. Thank you, and especially thank you, Narendra and Joe, for convening this event here. I think it is very important to remember that we launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment last year, and since then, PGII contributes to closing the global investment gap for quality infrastructure. As Emmanuel Macron already said, most about this initiative and all the activities we speak about today is already said, so I will not repeat it, just mentioning two questions. The first is we have to be active that these things can happen, and this is for me that we then have to also work on the infrastructure, the institutions that can work on financing. And for this, I think it is also important to make the work of the World Bank successful. Germany will contribute an additional 305 million euro of hybrid capital to the World Bank, and this is one of the aspects which is a side of the activity here. We also try to work with Africa, and the compact with Africa will convene in Berlin in November, also as a sign of creating infrastructure, developing economy, all the things we are together here. Thank you, Excellency. May I now invite the Prime Minister of Japan for his remarks, please. はい、ありがとうございます。PGII に関するサイドイベント。 The holding of the side event on Partnership for Global Infrastructure and Investment. On the occasion of the G7 Hiroshima Summit in May this year, as the G7 chair, Japan hosted a PGII meeting inviting private businesses for the first time, which was attended by leaders of G7 and partner countries.
Japan is delivering various transport infrastructure development projects, including the construction of Delhi Metro here in the city to support economic development of partner countries. Going forward, we want to take this effort a step further to expand the scope of cooperation to wider areas, including supply chains, to link people together by strengthening connectivity. We also intend to work on building industrial value chains in the whole of Bay of Bengal. The Road Network Connectivity Improvement Plan and other Northeastern Regional Development Initiatives in India will be organically linked with the Bay of Bengal Industrial Growth Belt Initiative, or Big B, that we are working on with Bangladesh. Furthermore, the Japan-ASEAN Comprehensive Connectivity Initiative that Japan announced at the ASEAN-related summit meeting will strengthen connectivity in a variety of areas, including transport infrastructure, digital connectivity, maritime cooperation, supply chains, electricity, as well as human and knowledge connectivity. In this way, Japan will continue to lead the effort for tangible implementation of PGII. To do that, partnership with diverse actors who subscribe to its principles is essential. For the promotion of PGII, I call on everyone gathered here once again to work together. Thank you very much. Thank you, Excellency. May I now invite the Prime Minister of Italy for her remarks. Your Highnesses, Excellencies, when we launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment just over a year ago, we committed to building better infrastructure for better future in low and middle income nations. We committed to cooperate with these nations with an equal, non-predatory approach to create new opportunities and prosperity. Today's launch of the new economic corridor between India and the Middle East and Europe goes precisely in this direction and is a milestone in strengthening global interconnections. And that is why I want to thank Prime Minister Modi, President Biden, and all the others, Ursula von der Leyen and all the others who made it possible, for it's a very important thing. This will scale up our economy's growth, opening enormous potential for mutual benefits in the business sector. Obviously, Italy is ready to play a decisive role in this process, also through the unique expertise of Italian companies in the maritime and railway sector. And we want to contribute in building bridges between the Mediterranean and the Indo-Pacific, also in the fields of energy and digital connectivity via Africa and the Arabian Gulf. In the energy sector, we can to work in different fields, including the production and transport of green hydrogen from the Middle East to the Mediterranean. We also support the European Commission on the Helmet project, a high-voltage submarine electricity interconnection that will link Italy to Tunisia. We are working to strengthen digital connections critical for innovation and growth between the wider Mediterranean and Asia. Lurama, Raman, named after India's Nobel laureate in physics, Raman, will connect Europe with India and involves major companies such as Google and Team Sparkle. However, we also are aware that there's still too much to be done to narrow the infrastructure gap with low and middle income nations, and this is why we will continue work on the Partnership for Global Infrastructure and Investment during the Italian G7 presidency next year. Thank you. Thank you to everybody. Thank you, Excellency. Thank you, Your Highnesses and Your Excellencies, for launching the landmark India, Middle East, Europe Economic Corridor. I would request all media and officials to remain seated and standing in their places while the leaders depart. Excuse me for interrupting, but as we say in my body used to work, a point of personal privilege. I did not mention
the Sheikh Mohammed of the UAE, but because I knew he wasn't speaking. But I do want to say thank you, thank you, thank you. I don't think we'd be here without you. Thank you. Thank you, Your Highnesses and Excellencies. I would request all media to remain seated and standing in their position while the leaders leave the room. Thank you. एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।